So any doubts to anyone in the concept of streamline? Streamline. What is a streamline? Sir, any path जिसकी tangent velocity मिल सके. Okay, so one thing I clarified the other day also, that is the instantaneous local velocity, Yes, sir. Yes. not the velocity. So if this is a streamline, what do you think? If you take a fluid element like this, the fluid element will be actually moving along this direction. So this was the fluid element which you were tracking. So fluid element will follow which path? This path. So this is the instantaneous location of the fluid particle that is on the streamline. So if I draw a curve, then at each point, if I draw a velocity vector, so what do you think? If this is a curve and I say velocity vector, say I choose 2 points, this is say point A and say this is point B. Say the velocity vector at these points is this and here it is like this. So what do you think when this B approaches A? So the distance here is some delta S. When delta S approaches 0, what will happen to these two velocity vectors? This velocity vector and this velocity vector. Anyone? What will happen to these two velocity vectors? These are velocity vectors at two different points along the streamline. What will happen to these two velocity vectors? Now this is the, say this is the velocity vector direction at point A and this was the velocity vector at point B. So do they have some angle between each other? You have this finite angle. But what will happen if this B approaches A? Say I mark B somewhere here now at this location. What will happen? Now the velocity vector at A and new point B dash will be pointing in the same direction. So as delta S approaches 0, this tangent actually points in the direction of the curve. So please remember, fluid particle is moving along this path. And instantaneous, if I look at this path, that is called a streamline. And what was a streak line? What is a streak line? What is a streak line? No idea, sir. हाँ जी, क्या कह रहे हो आप राजवंश? नहीं सर, अभी कोई आइडिया नहीं मतलब सर. Streak line. Streak line is, I have already pointed out that if, wait for a second, if this was, आप streamline पहले आप जैसे आपके पास ये flow है, you want to render some part visible to you. So what you will do is you will, if this was the fluid, so I'm marking this as the fluid. So this was the water flowing in the pipe. So this is the water flowing in the pipe. And you want to track a particular fluid element. So what you do is you take a dye and inject that dye at some location.
So that location say happens to be location A. So this location is location A. You are injecting dye, red dye at this location. So what do you know? The dye particles, when they move along the flow, they will form something like this. So this red line represents what? Streak line. That is, this is locus of all the fluid elements that have passed through point A at some point in time. तो जो ये डाई जा रही है, ये डाई ए के थ्रू होके जा रही है. तो ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये क्या है? दिस इज लोकस ऑफ, व्हाट इज दिस? दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट्स और लोकस ऑफ path followed by each fluid element that has passed through A. Any clear hai? Any doubts to anyone? So this is a streak line. So how it is different from streamline? Anyone? Streamline and streak line में difference क्या है? Anyone? Can you think about it? What is the difference between streak line and streamline? Anyone? हाँ जी. If you take a photograph of this, so that is the instantaneous value of this, instantaneous picture of this curve. That is called a streamline. But if I am not interested at some point in time, I am only interested whatever path is followed by all the particles that have passed through this point, then that is a streak line. Are you clear? Eh? And what about path line? The particles that have passed through point A या फिर all the points जो भी उसके आगे marked है. नहीं, जैसे अगर एग्जांपल बोलूं मैं, मार्क नहीं, जैसे मान लीजिए ये जो पार्टिकल था, मान लो ये पार्टिकल ए पॉइंट पे, ये टी पे ये वाला पार्टिकल निकला T1 पे. ठीक है, T1 पे ये निकला और कुछ टाइम के बाद ये कहां पहुंच जाएगा? ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा. जी सर. कुछ देर के बाद वो वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा. मतलब जो जो पार्टिकल यहां से निकलते जा रहे हैं वो मूव करते जा रहे हैं. जैसे मैं ऐसे करता हूं, इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड. आई एम ड्रॉइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट पिक्चर सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू. वेट फॉर अ सेकेंड. तो ऐसे करते हैं, इसको ज्यादा इजी रहेगा कि यहां पे मेरे पास एक इंजेक्शन सिस्टम है जो हर सेकंड में डिफरेंट कलर का एक फ्लूइड एलिमेंट छोड़ता है. तो मान लो ये है t इक्वल टू 0 पे छोड़ता है, और से रेड छोड़ता है t इज इक्वल टू 1 पे, एंड से ग्रीन है t इज इक्वल टू 2 पे, देन से दिस पिंक इज t इज इक्वल टू 3 पे. तो अब मैं यहां पे बना रहा हूं. सबसे पहले so this was the blue one, so I am putting it here. Say this was the particle and this was point A, so this was particle and this was point A. ये point injection point है. तो t इक्वल टू 0 पे उसने ब्लू छोड़ा, t इक्वल टू 1 पे क्या छोड़ा है इसने? रेड. so t इक्वल टू 1 पे there is red. So this blue, meanwhile, from t equal to 0 to t equal to 1, this blue might have traveled towards some distance. So this is where blue don't leave there, Raj. Okay, Hanji. So this is where this blue or violet is there. So this has moved to this location. Meanwhile,
another particle has been injected at this point, and this is the red one. So meanwhile, this red has also moved away. So now violet has reached this position, red has reached this position, and you have another particle injected here, that is green. Likewise, you could have this pink. So what has happened is you have a pink here, then green here, then red here. So what you have is, I am now drawing here. So I'm now drawing a picture that you see like this. So purple has reached the largest distance. Then there is red. Then there is green. And then at last there is pink. Sorry, this is the pink one. I don't know what happened. So this is the pink one or blue one, whatsoever. So the injection point was simply at this location at A, but now this, if I join all these, that is locus of all these points, wherever the blue travels, wherever the green travels, where the red travels, wherever the purple travels, this line if I join, that is called the streak line. Are you clear? Hai? But what about the streamline? Streamline is instantaneously. If I take a photograph now and I try to locate this, then this is a streamline. Now say at some other instant t is equal to 10 seconds, I made a flow change using a valve here. What will happen instantaneously? What will happen to the flow? The flow might change. So what shall happen is, the fluid particle which was injected at point A, although initially these were following the straight path, but after I have made some changes, it started following some other path. So this was the new path followed by the particles. So streak line is changing with respect to time. Streamline I don't define with respect to time, I define instantaneously. So now this is the, what is this? This is the streamline, but streak line will be defined by both of these, because this was also what has passed through this point, and this is what also has passed through point A. So this combination is called a streak line, but only these lines or these lines are called streamlines. So streamlines only define instantaneous picture of the flow. Streak line define the picture of the flow as a function of time. And you clear it? Any doubts to anyone now? No, sir. Okay. So what about now the last part? The path line. What do you think is a path line? In a path line, I am not interested in whatever is passing through these points, but I am only interested in a single fluid particle. That is, if I take this flow and I have say injected some dye element here, so I am tracking this dye element only, how it is moving. Only one element. I am not tracking all the elements that are passing through this point A, but I am tracking only a single particle that is moving along the flow. For instance, if you had a candle and say some smoke was coming out, you imagine, concentrate a part of the smoke, that this is the part of the smoke you will be analyzing, and then you analyze its movement. So whatever path it follows is called the path line. So please remember, when it is steady flow, streamline
streak line and path line, all of them are same. So this is a very important consideration. That is, when the flow is not changing, you know that path line, streak line, streamline will remain the same. Try to imagine this. If this was the flow, fluid particles were moving, so this line instantaneously is a streamline. As nothing is changing with time, so whatever has got injected at point A will always follow this path. So that means streak line will always be coinciding with streamline because nothing is changing with respect to time. Likewise, if I track a particular fluid element that has passed this, this will also follow this path. So that means path line is also coinciding with the streamline and streak line. So under steady state condition, सर एक बार दोबारा समझा दो ये वाला स्ट्रीमलाइन मतलब आपने जो बताया आपको वैसे पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीमलाइन समझ आ गया? यस सर तो अगर स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो का क्या मतलब है? सर मतलब कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है मतलब फ्लूइड की वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही सो स्टेडी जब मैं बोलता हूं तो ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टेडी बोल रहा हूं मैं? आइलैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यस सर तो मान लो ये था मेरे पास एक फ्लूइड फ्लो. अब सोच के बताओ, मेरे पास यहां पे मैंने, ये पॉइंट ए है मेरे पास, यहां पे मैंने डाई इंजेक्ट की, ठीक है? तो जो डाई इंजेक्ट करूंगा वो ये वाला पाथ फॉलो करेगी, ये पाथ फॉलो कर रही है. यस क्लियर है? यस सर अगर फ्लो इस डायरेक्शन में है तो जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये क्या दिखा रहा है? जो पार्टिकल ए पे था वो जो पाथ फॉलो करेगा. तो जैसे जैसा डाई आती जाएगी, ए से पास करती जाएगी, वो इस पाथ को फॉलो करती जाएगी. तो अगर मैं इंस्टेंटेनियसली फोटोग्राफ ले लूं तो ये क्या बनी? स्ट्रीमलाइन. ठीक है? और अगर मान लो टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो जो जो ए लोकेशन से निकल रहा था वो यहीं पे मूव करेगा हमेशा. यस सर इसका मतलब जो स्ट्रीक लाइन है, स्ट्रीक लाइन क्या है? लोकस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए. तो ये जो इनका पाथ होगा ये भी स्ट्रीमलाइन के जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम से कोइंसाइड करेगा. और अब मैं आ जाऊं पाथ लाइन पे. पाथ लाइन का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल था जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूं. अगर पार्टिकल यहां से निकल गया तो वो हमेशा यहीं पे आएगा. यस सर तो इसका मतलब पाथ लाइन भी, स्ट्रीमलाइन भी और स्ट्रीक लाइन भी एक ही लाइन है. यस सर सो प्लीज रिमेंबर, पाथ लाइन, streamline and streak line, they are coinciding when it is a steady flow. अब मुझे सोच के बताओ एक मिनट के अंदर, ये coincide unsteady में क्यों नहीं करती? Give me some physical insight into it. Say this was what? A dye injected at point A. यहां से एक पार्टिकल निकल गया, ये t इक्वल टू 0 पे था, इसकी लोकेशन ये थी t इक्वल टू 1 पे. एकदम से मैंने क्या किया, यहां पे फ्लो रेट को चेंज कर दिया. तो अब ये पार्टिकल कहां चला जाएगा? ये डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर सकता है. क्लियर है? एनी डाउट्स? यस सर तो विद टाइम अब ये स्ट्रीमलाइन, अब इसका जो पाथ है वो डिफरेंट हो गया पहले से. अगर मैं t इक्वल टू 0 पे करता तो ये था इसकी स्ट्रीमलाइन, ये स्ट्रीमलाइन थी. लेकिन t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब मैंने इस वॉल को चेंज कर दिया, व्हाट हैज हैपेंड इज सडनली द फ्लो हैज चेंज्ड. सो व्हाट हैज हैपेंड इज now the particle is not moving in this straight path but it is moving in the some other direction. Any doubts to anyone? So I'm moving forward now. So if you have any doubts, you can ask me between
path line, streamline, and streak line, all of them coincide only under one condition, that is steady state condition. That should be clear in your mind. सर जब आपने उसका फ्लो चेंज करा था तो जो उसकी स्ट्रीक लाइन है वो भी चेंज हो जाएगी ना? हाँ, स्ट्रीक लाइन चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रीक लाइन में पहले ऐसे था, पहले मान लो ऐसी थी स्ट्रीक लाइन, जब भी फ्लो चेंज हुआ क्या होगी? तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रीक लाइन होगी। ये कुछ टाइम तक ये थी स्ट्रीक लाइन और उसके बाद ये होगी, तो ये टोटल को मैं स्ट्रीक लाइन बता रहा हूं। और स्ट्रीम लाइन क्या होगी? t इक्वल टू 0 पे ये थी स्ट्रीम लाइन और t इक्वल टू 1 पे क्या थी स्ट्रीम लाइन? सिर्फ ये। तो ये पार्ट स्ट्रीम लाइन में आया ही नहीं, क्योंकि वो तो इंस्टेंटेनियस बताता है, ये तो था ही नहीं t इक्वल टू 1 पे। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? यस। So this is the difference among stream, streak and path line. Now I am coming to the Bernoulli's principle, which you are using for measuring flow variables. One is you measure pressure and other is you measure velocity. तो किसी भी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है, at a particular instant, a streak line is the same as the streamline. So one of the students has asked the question whether at a particular instant streak line is the same as streamline. So answer is no. So the reason is, I think this is not still clear to you. Let me be a little bit more innovative in this, then only you will get to know. Say, मैं एग्जांपल बोलता हूं, ये एक पाइप थी, so this is pipe at t is equal to 0, and what I have done is I have inclined the pipe at t is equal to 1 second. At t is equal to 1 second. तो आपके हाथ में कोई पाइप थी, वो आपने पहले हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, उसके बाद आपने उस पाइप को, मान लीजिए ये पाइप थी आपके पास t इक्वल टू 0 पे, ये वाली पाइप, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये थी आपके पास पाइप सेम है, आपने सिर्फ उसको ओरिएंटेशन चेंज कर दी। तब यहां पे मैं आप डाई इंजेक्ट कर रहा हूं, तो इस केस में स्ट्रीम लाइन ऐसे होगी, किसी को कोई डाउट? t इज इक्वल टू 1 पे दिस इज द स्ट्रीम लाइन, दिस ए बी, एंड t इक्वल टू 1 पे स्ट्रीम लाइन क्या होगी? सी डी। So AB is the streamline at t equal to 0 and CD is the streamline at t is equal to 1. यहां तक किसी को डाउट? Any doubts to anyone? Now what about streak line? What is streak line? Do you define streak line at an instant? No. Streak line is not defined at an instant. So please remember, streamline is defined at an instant. But streak line is not defined at an instant. It is defined whatever has passed through that point with respect to time. So what do you think will be the streak line? If I ask you, it should be at t is equal to 1. I cannot define t equal to 1, but streak line will be somewhat like this. So this is streak line.
and it is continuously evolving. You cannot, it will change as the things change. So please remember AB and CD independently, these are streamlines at t equal to 0 and t equal to 1. But streak lines you cannot define at any instant in time. It is whatever has passed through some point. If you join all the particles that have crossed some point at some point in time, that combined line is called the streak line. And you clear hai? Naveen, is that clear now? Any doubts? No, sir. So any doubts to anyone now? Streak line and streamline. So now I am coming to the next part, that is we have devised Bernoulli's principle. So Bernoulli's principle or Bernoulli's theorem. So we as engineers want to utilize this principle, and this principle could be utilized in measurement of flow variables, that is pressure and velocity. So how can we measure pressure and velocity of the flow? So one thing you are clear with it, that if you take 2 points, say I take A point here and B point here, what do I know? Along the same streamline, if it is inviscid, because this will be inviscid, because this is away from the boundary. So I know that P upon PA upon rho G plus VA square upon 2G plus YA is equal to PB upon rho G plus VB square upon 2G plus YB. So looking at P and PB, that is the difference in this manometric head, you can find out the velocity at point A. So that is, you can find out the flow velocity. So you have used Bernoulli's principle for measurement purposes. So you can actually find out what is the velocity of the flow within a channel through this kind of application of Bernoulli's principle. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Now this is a real flow in which, if you are able to see, this is a converging section. So this is like this. So this converges here. So you have some area, smaller area here, wherever. So this is smaller area and this one is bigger area. So this is big area, this is small area. So you are able to see there are two things. One is called stag, that is called stagnation pressure, and one is stat, that is called static pressure. So stagnation pressure is actually the sum of all the heads. So that is P upon rho G plus V square upon 2G. So that includes static as well as the dynamic head. So let me know which of the two measures stagnation, this thing or this thing. One or two? Which two does? Piezometer. One or two measured stagnation pressure? One or two? One. Rajansh? Sir, stagnation in the sense of कि अगर fluid रुक गया है अंदर flow का. हाँ. सर तो अगर fluid रुक गया है तो that तो कोई भी measure कर देगा ऐसे तो. Fluid रुक गया मतलब नहीं. देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं तो बहुत क्रिएट होगा. 2 is right. So if I ask you, say for instance, a very simple example, आपके पास एक टैंक होता है, ये टैंक है. So this is the tank which is filled up till height
So this is h height. If I ask you, what is the pressure exerted by this fluid at this location? What will be your answer? If this is height h and fluid is inside this tank, what is the pressure at some point? So this point. Rho gh? Is that Yes, clear? sir. Yes, sir. So this is what is static pressure. And if the fluid is not flowing, this is also what? Stagnation pressure. Are you clear? Hai? Yes, sir. Any doubts to anyone? No, sir. So static pressure and stagnation pressure can be interchangeably used when it is fluid is stationary. Are you clear? Hai? Any doubts? Now what is happening is, now the fluid is flowing. So try to see in this diagram. So originally, if I let you know, so this was say height, this was say height h, and say if this valve was closed, you know that pressure at this point is rho gh. Now you suddenly open this valve. So I have opened up this valve. Now you know that this is the pressure energy, this one. This needs to be conserved if there are no viscous forces. Although this will reduce if there are viscous forces, but this will be the same if it is an inviscid region of flow. So what happens is, now this is a static tube. Static tube means आपने जो इस पाइप के ऊपर बस एक गली की, उस पे एक ट्यूब को फिक्स कर दिया. तो जो ये लेवल है, आपको जो ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल, this level is less than rho gh. ये इतना कम है. So this much it is less. ये वाला. तो ये कहां चला गया? पहले तो इतना हेड था. अब जो प्रेशर है स्टैटिक, वो इतना ही रह गया. जो ये ब्लू पार्ट है वो कहां चला गया? वेलोसिटी के लिए. वेलोसिटी के लिए. तो यहां पे सारी एनर्जी प्रेशर की फॉर्म में थी. अब वो एनर्जी किस किस में कन्वर्ट होगी? स्टैटिक प्रेशर और काइनेमेटिक प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी. यस. हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? तो अब आप दोनों चीजों में देखें ध्यान से अगर, तो मैं यहां पे सेम लोकेशन पे दो ट्यूब्स लगा रखी हैं. एक ये ट्यूब 1 है और एक ट्यूब ये 2 है. तो जो ये ट्यूब है जो बिल्कुल मिडल में है, दिस एंश्योर्स दैट जो यहाँ पे फ्लूइड आ रहा होगा वो एकदम स्टेशनरी हो जाए. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सारा जो काइनेटिक हेड है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? प्रेशर हेड में. तो जो ये आपको यहां तक लेवल दिखा रहा है वो क्या लेवल है? स्टैग्नेशन प्रेशर. यस. एंड दिस लेवल इज स्टैटिक प्रेशर. And the difference between the two is called dynamic pressure. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. क्लियर? तो मुझे एक और चीज बताइए, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वे, कि अगर यहां पे ये लेवल था तो यहां पे जो लेवल होगा वो इससे कम होगा कि इसके बराबर होगा? जैसे अगर मैं ये लाइन बना दूं तो ये सेकंड जो ये ऐसे होनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल साथ में. मतलब जहां से यहां पे कुछ रो GH था, आप ये कह रहे हो कि ये जो टोटल हेड है ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए स्टैटिक प्लस डायनेमिक में. तो जो ये स्टैग्नेशन प्रेशर है तो ये इससे कम होगा कि इससे ज्यादा, इसके बराबर ही होगा? व्हाट डू यू थिंक? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? बराबर. यस सर, बराबर होना चाहिए सर. शायद बराबर तब होगा अगर कोई भी इसमें डिसिपेशन ना हो. मतलब अगर कोई विस्कस होता, बहुत विस्कस होता, तो क्या होगा? कुछ एनर्जी यस डिसिपेट हो जाएगी. फ्लो में.
यूज हो जाएगी। फ्लो में नहीं यूज हो जाएगी, फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाएगी कुछ एनर्जी, एंड Yes. दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड. So this should be clear, but when we are applying Bernoulli's equation, we are not bothered about what we are not bothered about. Viscosity, because हम Viscosity. in viscous inviscid region में बात करते हैं शायद. ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी ले लिया, तो मुझे क्या पता है अगर इनविसिड रीजन है तो क्या होगा, पी ए अपॉन रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई ए. दिस शुड बी इक्वल टू पी बी अपॉन रो जी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई बी. लेकिन मान लीजिए ये तो मैंने आइडियल केस बोल दिया, एक्चुअल में ऐसे होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि फ्लूइड की विस्कोसिटी जैसा आप बता रहे थे वो इंटरफेयर कर जाएगी इनविसिड रीजन तो है इसमें, वैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो पीए में से क्या, इस पूरे टर्म में से मुझे कुछ क्या माइनस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे सब्ट्रैक्ट होगा ना. इसको मैं हेड लॉस लिख सकता हूं. ओके. आप समझ रहे हो ना, यहां पे मान लो टोटल एनर्जी कुछ 100 थी, यस सर. यहां पे एनर्जी 100 तो नहीं रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी 100 थी, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी 100 थी, यहां पे क्या हो जाएगी, यस. 98, और जो 2 है वो एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, 2 कहां जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन जब मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूं, मैं इस चीज को काउंट फॉर नहीं करता, मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं. सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज नेग्लिजिबली स्मॉल as far as my pressure measurements are concerned. So I use this principle for measuring pressure and velocities. And it clear hai? Yes sir. So this is an important concept. Now try to see, as the fluid is flowing in this system, what is happening is I am joining two things. अगर मैं join करता हूं static head को, so the line joining static head is called what? I have written down here hydraulic grade line. So hydraulic grade line represents the total static head. And clear hai? And you know that Yes. at this location static head and stagnation head are same. तभी ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं यहां पे. So this solid line represents EGL, that is energy grade line. That is the total head that includes all the three. This is energy grade line. If you don't include the dynamic part, then it is called the hydraulic grade line. So you know that the starting point is here. So starting point here means there is no dynamic head because the fluid is stationary. So the total head at this location, if the valve was closed, was only due to the static pressure, and that static pressure is also equal to hydraulic pressure, stagnation pressure. So the line joining static heads is called hydraulic grade line, and the line joining stagnation pressures is called energy grade line. So this should be importantly kept in mind. What does that mean? यानी क्लियर है? और अब यहां पे ध्यान से देखिए, जो स्टैटिक हेड है वो कहां पे आ गया, यहां पे आ गया. व्हाट डज दैट मीन? यहां पे प्रेशर कितना है, इस कॉन्ड्यूट से जब बाहर निकलेगा प्रेशर कितना होगा इसके ऊपर, जीरो. एटमॉस्फेरिक, गेज जीरो.
गेज 0, तो तभी आपका जो स्टैटिक हेड भी आ जाएगा वो किसके बराबर आना चाहिए? दिस थिंग, बिकॉज नाउ इट इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द ओनली प्रेशर इट हैज इज, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है ये किस चीज का डिफरेंस है? जो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है. So please remember, whenever some jet is actually there, it is under atmospheric pressure. So this should be clear in your mind. तो कोई भी अगर आपका नोजल है, नोजल से फ्लूइड बाहर आ रहा है, so the pressure on that jet is actually atmospheric. तो उसमें जो प्रेशर एनर्जी है वो सिर्फ किसकी वजह से है? काइनेटिक एनर्जी या डायनामिक हेड, जो मर्जी आप बोल सकते हैं इसको. एनी डाउट्स टू एनीवन? सर, हाँ सर इस वाले में मतलब रीजन क्या है कि हमारा HGL घट रहा है? लाइक मतलब ठीक है, लॉजिकली तो समझ आ रहा है कि दिस हैज टू डिक्रीज, बट दो HGL और प्रेशर वेरिएशन डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द टैंक इज डिक्रीजिंग, हाँ. ऐसे एज सच रीजन? अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये क्यों कम हो रहा है? जी सर, एग्जैक्टली. अच्छा ठीक है, एक सेकेंड. तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, जो यहां पे है, अच्छा आप ये कह रहे हो, तो आइडल में कैसे होगा? आइडल में तो अगर नॉर्मल हम ऐसे रखते हैं तो वो सिर्फ प्रेशर वेरिएशन तभी आएगा ना जब हमारे पास तो एरिया आपके ऑफ आंसर ये है, आप मुझे ये बताइए, आंसर ही आपका आपको मिल गया. अब ये बताइए कि सबसे पहले जो EGL है वो क्यों कम हो रहा है? EGL कम हो रहा है EGL तो क्योंकि क्या है? टोटल हेड है ना, यस सर, टोटल हेड है प्लस वाई GY, सॉरी वाई, वाई. प्लस यस वाई. सर. तो यही चीज कम क्यों हो रही है? इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो. डिक्रीज यस हो रही है. सर. वो मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही होगी? सर प्रेशर जो होगा उस पे कम होते जा रहा है. तो इसका मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू थर्मल थर्मल. एनर्जी. ओके. यस सर. ठीक है ना? तो ये हेड लॉस की वजह से क्या हो रहा है? ये डिप डाउन कर रहा है. यस सर. हाँ जी, क्लियर है कि अगर आइडल जी फ्लो सर. होता फिर तो डिप ही ना करता, फिर तो आपको कोई पंप की जरूरत ही ना पड़ती. यस सर, वही आइडल फ्लो में तो ये सेम रहना चाहिए था. हाँ, तो आइडल फ्लो में क्या होगा? ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा, जैसे ये है देखो. जी सर. इट डज नॉट इंक्लूड एनी हेड लॉस. हेड लॉस. हाँ जी, क्लियर है नवीन? सो आई एम रिपीटिंग द PATM पॉइंट, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पॉइंट है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ, तो आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट. जब यहां पे फ्लूइड आ गया, तो यहां पे फ्लूइड जो है इस लोकेशन पे, इट इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसमें और तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. इट इज नॉट अंडर एनी अदर प्रेशर. तो द स्टैटिक प्रेशर नाउ रीचेस 0 गेज और सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्योंकि जब यहां पे फ्लूइड होता है तो ये इसका इस पे इफेक्ट था कि जो ये हेड था वो इस पे अप्लाई हो रहा था, तो ये इस पे एग्जर्ट कर रहा था फोर्सेस पाइप पे, और पाइप की वॉल इसके ऊपर बैक प्रेशर अप्लाई कर रही थी, तो एटमॉस्फेरिक से ज्यादा था यहाँ पे प्रेशर, यहां भी ज्यादा था. अब जब इससे बाहर ही निकल गया ये, इस पे क्या वॉल कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही होगी? वॉल तो है ही नहीं, तो वॉल तो प्रेशर अप्लाई कर नहीं सकती. तो सिर्फ प्रेशर कौन सा अप्लाई हो रहा है इस पे, इस रीजन पे जो बाहर निकल चुका? एटमॉस्फेरिक. हाँ जी, क्लियर है नवीन? So any doubts to anyone? Any doubts to anyone? So please remember, the energy grade line will remain a horizontal line if I assume that there are no
head losses. So the line will look somewhat like this, what you are able to see. तो यहाँ पे देखिए ये आइडल केस है जहां पे हेड लॉस नहीं लिया, तो क्या देख रहा हूं मैं कि एनर्जी ग्रेड लाइन स्ट्रेट है, और जो HGL है, HGL में क्या होना था, यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, हाई। तो HGL क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक प्रेशर। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट होगी, तो दैट्स व्हाई दिस इज द hydraulic grade line that is representing the static pressure. हाँ जी, any doubts to anyone? Any doubts to anyone? So these are the 3 flow meters which are used to measure pressure drop or velocity, more appropriately velocity. लेकिन ये फाइंड आउट हम करते हैं उसी से, प्रेशर चेंज को फाइंड आउट करके बर्नौलीज इक्वेशन लगा के।